A high package job that is from Amazon. The job role is data analyst support. As guys, that Amazon provide high package opportunity for their freshers as well as experience. So here is the opportunity for data analyst support, and I have another opportunity from IBM. So I'll tell you from the Amazon opportunity. So welcome to Easy Apply, guys. This video will help you to find the best job for your career. So मैं बता दूं कि अगर हम बात करें अमेज़न की जॉब क्रैक करने की जो प्रोसेस होती है, ये ऐसी चीज़ें, तो रोड मैप की बात करें तो रोड मैप मैं आपको जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी पूरा तैयार हो रहा मटेरियल में इकट्ठा करके फिर आपको पूरा जल्दी ही बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इजी अप्लाई को टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब ओपनिंग, अबाउट एनी कैंपस ऑफ कैंपस हायरिंग एंड प्लेसमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन, ऑल द थिंग्स यू विल गेट हियर every day with every new video. So let's start the opportunity and the needed qualification and eligibility. Here is the key of this role, like providing customer and vendor data and insights for better impact decision, automated data templates and reports. तो अगर आपने डेटा एनालिस्ट की कहीं कुछ इंटर्नशिप करी है, कोई कोर्स किया, तो आपको जॉब रोल की बात करें तो वो आपने ऑलरेडी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपके पास डेटाबेस का नॉलेज है, एसक्यूएल का नॉलेज है, डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज है, दैट वुड बी अ वेरी बिग प्लस टू यू। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूर अप्लाई करो, वेदर आपने कोई डेटा एनालिस्ट की कोर्स की हुई है, कोई इंटर्नशिप है आपकी या नहीं, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाई पैकेज अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड अपडेट्स को लेकर के अगर आप परेशान हो कि कब क्या होगा एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट फेज, दैट विल ऑल बी अवेलेबल हियर। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगी। अभी बात करें जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपके पास नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग एक्सेल एंड एसक्यूएल स्किल, पैशन ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इनसाइट, बिल्डिंग फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, हाई अटेंशन टू डिटेल एंड डेटा fidelity, ability to prioritize and focus on high impact areas, teamwork and problem solving skills, communicate through clearly and good verbal command. And here is the basic qualification required for applying this position is bachelor degree in engineering, mathematics and statistics or similar quantitative discipline. Technical skills like proficiency in SQL, Microsoft Excel, 0 to 4 years of experience in hands-on analytics, dashboarding, querying. Strong analytical skills has ability to start from ambiguous problem statement, identity and access relevant data, make appropriate assumption, perform insightful analysis and draw. And conclusion relevant to the business problem like communication skills, ability to work effectively and independently in a fast-paced environment with tight deadline, ability to engage with cross-functional team for implementation of project and program requirement. ये अपॉर्चुनिटी आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगली जो अपॉर्चुनिटी है, दैट अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट, डजेंट मैटर whether they are from engineering background or art background, any other backgrounds, all are welcome to apply for that IBM position. So let's move for the IBM position, and IBM is looking for analyst risk and compliance. So first of all, the minimum technical and professional expertise required is minimum 0 to 1 year of experience in known your customer due diligence and customer identification program, working knowledge in US UK regulatory policy, proven ability to deal with highly personal confidential information, experience in financial service transaction data analysis, excellent English writing and reading and speaking skill, a good analytical and problem solving skills. तो ये skills set जो है हर opportunity के लिए required होती है, जो इसके लिए required है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना होता है। एंड इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, अगर जैसे कि मैं बताऊं, अगर ये इसमें डेटा एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें अगर आपके पास बैंकिंग की नॉलेज है या फिर अकाउंट्स की नॉलेज है तो ये बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा आपका। तो BCom के स्टूडेंट जरूर अप्लाई करें, कॉमर्स के स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई करें, इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इट इज़ ऑल्सो हैज़ ग्रेट पैकेज टू ऑफर, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। मिनिमम जो है 6 लाख पर एनम पे जाती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड नॉट गेट एनी ऑफर लेटर टिल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तब तक आप ये करो एंड कीप अप्लाइंग फॉर अदर पोजीशन। आई कीप यू पोस्टेड फॉर न्यू अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब वैकेंसीज
based on your skills and course qualifications. So preferred technical and professional expertise experience is ambiguous individual who work can work there under their own direction toward agreed target and goals, ability to work under tight timeline, and have been part of change management in initiative, proven interpersonal skills while contributing to team effort by accomplish related result as needed, enhance technical skills by attending educational workshop, reviewing publications, and etc. And the required education is bachelor degree. Any degree holder can apply for this job. And if you have मास्टर डिग्री दैट वुड बी प्रिफर्ड. तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर परस्यू कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर मेंशन करो. दैट वुड बी प्रिफर फॉर योर कैंडिडेचर. तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. एंड कीप अप्लाइंग फॉर ऑल द वैकेंसीज अपलोडिंग, क्योंकि उसके अपडेट्स उसकी जो सारा कुछ प्रोसेस आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. एंड डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन ट्रैक द अपडेट अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी. और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो नहीं बनाता, उसका डायरेक्ट मैं टेलीग्राम पे पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर थिंग्स टू डिस्कस एंड हैव एनी अदर क्वेरी कंसर्न, you can drop it down into the comment box. And the job apply link you can find from job description, and other important links are also mentioned in the into the video description. So best of luck for your future and for your career, and do hit the like button if you found this informative. Good luck for future, for career.